ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दृढधन्वोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्यायः। राजोवाच किं फलं दीपदानस्य मासे श्रीपुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनिश्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। वाल्मीकिरुवाच शृणुस्व राजशार्दूल कथां पापप्रणाशिनीं यां श्रुत्वा विलयं याति पापं पञ्चविधं महत्। सौभाग्यनगरे राजा चित्रबाहुरिति श्रुतः सत्यसन्धो महाप्राज्ञश्चासीत् शूरतरस्परः। सहिष्णुः सर्वधर्मज्ञः शीलरूपदयान्वितः ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तः कथाश्रवणतत्परः। स्वदारनिरतः शश्वत् पशुपुत्रसमन्वितः चतुरङ्गबलोपेतः समृद्ध्या धनदोपमः। तस्य भार्या चन्द्रकला चतुष्षष्टिकलान्विता पतिव्रता महाभागा भगवद्भक्तिसंयुता। तया सह महीपालो बुभुजे मेदिनीं युवा विना श्रीकृष्णदेवं सा नैव जानाति दैवतम्। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर्महीपतिः दृष्ट्वा समागतं दूरादगस्त्यं मुनिपुङ्गवम् प्रणम्य दण्डवद् भूमौ विधिना तमपूजयत्। कल्पयित्वासनं भक्त्या तस्थौ मुनिवराग्रतः विनयावनतो भूत्वा जगाद मुनिसत्तमम्। राजोवाच अद्य मे सफलं जन्म ह्यद्य मे सफलं दिनम् अद्य मे सफलं राज्यम् अद्य मे सफलं गृहम्। यस्त्वं समागतो मेऽद्य गृहे श्रीकृष्णसेवकः मुक्तोऽहं पापसङ्घातात् यत्त्वयाहं निरीक्षितः। तुभ्यं समर्पितं राज्यं गजाश्वरथसंयुतम्। वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ नास्ति देयं मया तव मेरुतुल्यं भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितम्। कपर्दिका प्रमाणं तु व्यञ्जनं वान्नमुत्तमं न यच्छति दिने यस्तु वैष्णवाय द्विजन्मनि। तद्दिनं विफलं तस्य कथितं वेदपारगैः विष्णुभक्ताश्च ये केचित् सर्वे पूज्या द्विजातयः। तेषां संभावना कार्या वाङ्मनःकायकर्मभिः कथितं मम गर्गेण गौतमेन सुमन्तुना। तावत् प्रभा च ताराणां यावन्नोदयते रविः तावदन्ये द्विजन्मानो यावन्नायाति वैष्णवः। अगस्त्य उवाच चित्रबाहो महाभाग धन्यस्त्वं साम्प्रतं नृप इमा धन्याः प्रजाः सर्वाः यस्त्वं रक्षसि वैष्णवम्। तस्मिन् राष्ट्रे न वस्तव्यं यस्य राजा न वैष्णवः वरो वासो वनेषोऽन्ये न तु राष्ट्रे ह्यवैष्णवे। चक्षुर्हीनो यथा देहा पतिहीना यथा प्रिया निरक्षरो यथा विप्रस् तथा राष्ट्रमवैष्णवम्। दन्तहीनो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः द्वादशी दशमी विद्धा तथा राष्ट्रमवैष्णवम्। दर्भहीना यथा सन्ध्या तिलहीनं च तर्पणम् वृत्त्यर्थं देवसेवा च तथा राष्ट्रमवैष्णवम्। सकेशा विधवा यदवत् व्रतं स्नानविवर्जितं शूद्रश्च ब्राह्मणी गामी तथा राष्ट्रमवैष्णवम्। स राजा प्रोच्यते सद्भिर्यः श्रीकृष्णपदाश्रयः तद्राष्ट्रं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजां। दृष्टिर्मे सफला राजन् यन्मया त्वं निरीक्षितः अद्य मे सफला वाणी ह्यच्युते यत्त्वया सह। इदं राज्यं त्वया राजन् प्रकर्तव्यं ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्याम्यस्तु स्वस्तिति।
इत्युक्त्वा गन्तुकामं तम् अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं ननाम परया भक्त्या महिषी सा पतिव्रता। अवैधव्यं सदा तेस्तु अगस्त्य उवाच अवैधव्यं सदा तेस्तु भक्त्या भजपतिं शुभे दृढा तेस्तु सदा भक्ति श्रीगोपी जनवल्लभे। इत्थमाशीर्ददानं तं भूयः प्राह महीपति बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा विनयानतकन्धरः। चित्रबाहुरुवाच विपुला मे कथं लक्ष्मी कथं राज्यमकण्टकं पतिव्रता कथं पत्नी किं कृतं सुकृतं मया। एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र तवाहं शरणं गतः करामलकवत्सरवं जानासि त्वं मुनीश्वर। इत्थमावेदितो राज्ञा ह्यगस्तो मुनिपुङ्गवः समाहितमना भूत्वा जगाद नृपसत्तमम्। अगस्त्य उवाच मया विलोकितं सर्वं प्राक्तनं चरितं तव तत्सर्वं कथयाम्यद्य सेतिहासं पुरातनम्। चमत्कारपुरे रम्ये मणिग्रीवाभिधानभृत् सञ्जातः शूद्रजातीयो जीवहिंसापरायणः। नास्तिको दुष्टचारित्रः परदारप्रदर्शकः कृतघ्नो दुर्विनीतश्च शिष्टाचारविवर्जितः। आसीत् तस्य प्रिया भार्या रूपशीलतः सुन्दरी कर्मणा मनसा वाचा पतिसेवापरायणा। पतिव्रता महाभागा धर्मनिष्ठात्मनस्विनी भावं न कुरुते दुष्टं तस्योपरि कदाचन। ज्ञातिभिः सपरित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्म कृत् राज्ञा क्रुद्धेन ते सर्वं राज्ञा क्रुद्धेनाथ सर्वं गृहीतं धनमुत्तमम्। ततो वशिष्ठं यत्किञ्चित् गृहीतं ज्ञातिभिस्तदा गते द्रव्ये धनाकाङ्क्षा तस्यासीद् विपुला तदा। क्षीयमाणे धने साध्वी न तम् अत्यजत् उन्मनाः। एवं तिरस्कृतः सर्वैर्गतवान् निर्जनं वनं हत्वा जीवाननेकांश्च सचकर्थात्मपोषणम्। एवं वर्तयतस्तस्य पत्न्या सह महीपति। एकदा धनुरुद्यम्य मणिग्रीवो वनं गतः बहुव्यालमृगाकीर्णं मृगमांसजिगृक्षया। तस्मिन् निर्मानुषेरण्ये मध्ये मार्गं महामुनिः उग्रदेव इति ख्यातो दिङ्मूढो विह्वलोऽभवत्। तृषा सम्पीडितोऽत्यर्थं मध्यन्दिनि गते रवौ तत्रैव पतितो राजन् मुमूर्षुरभवत्तदा। तं दृष्ट्वातिदया जाता दिग्भ्रष्टं दुःखितं द्विजम् उत्थाय तं द्विजन्मानं गृहीत्वा स्वाश्रमं गतः। दम्पतिभ्यां कृता सेवा दुःखितस्य द्विजन्मनः उग्रदेवो महायोगी मुहूर्तानन्तरं तदा। अवाप्य चेतनां यत्र विस्मयं समजीगमत् तत्रस्थोऽहं कुतश्चात्र केनानीतो वनान्तरम्। मणिग्रीवो वदद् विप्रं रमणीयमिदं सरः अत्रास्ते शीतलं वारि पद्मिनी पुष्पवासितं। तत्र स्नात्वा जले शीते कृत्वा पौर्वाह्निकी क्रिया कुरु ब्रह्मन् फलाहारं पिब वारि सुशीतलं। सुखेन कुरु विश्रामं मया संरक्षितोऽधुना उत्तिष्ठत्वं मुनिश्रेष्ठ प्रसादं कर्तुमर्हसि। लब्धसंज्ञस्तदा विप्र उग्रदेवो गतश्रमः मणिग्रीववचः श्रुत्वा समुत्तस्थौ तृषातुरः। मणिग्रीवभुजालम्बी जगाम सरसीतटम् उपविष्टश्चित्रबाहो तत्तटे वटशोभिते। उपविष्टश्चित्रबाहो तत्तटे वटशोभिते। विश्रम्य तत्क्षणं विप्रो
वटच्छायामधिसृतः स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा वासुदेवमपूजयत्। देवान् पितृंश्च संतर्प्य पपौ नीरं सुशीतलम्। उग्रदेवस्ततः शीघ्रं वटमूलमुपाश्रितः। मणिग्रीवः सपत्नीको ननाम मुनिसत्तमम्। विनयेनावदद वाचम् आतिथ्यं कर्तुमुन्मनाः। मणिग्रीव उवाच अस्मत्सन्तारणायाद्य मदाश्रममुपागतः। ब्रह्मन् स्वदर्शनादेव पापं मे विलयं गतम्। इत्युक्त्वा तं प्रियामाह। मणिग्रीवो मुदान्वितः अयि सुन्दरि पक्वानि स्वादूनि यानि यानि च तानि चूतफलानि त्वं शीघ्रमानयमाचिरम्। अन्यत् कन्दादि यत्किञ्चित् तत्तदानय शुभाननि। निजनाथ वचः श्रुत्वा फलान्यादाय सुन्दरी कन्दादिकं च विप्राग्रे स्थापयामाश हर्षतः। मणिग्रीवः पुनर्वाक्यम् उवाच मुनिसत्तमम्। फलान्यङ्गीकुरु ब्रह्मन् कृतार्थी कुरु दम्पती। उग्रदेव उवाच त्वामहं नैव जानामि कस्त्वं भो कथयस्व मे। कस्त्वं भो कथयस्व मे। अज्ञातस्य न भोक्तव्यम् अज्ञातस्य न भोक्तव्यम् ब्राह्मणेन विजानता। मणिग्रीव उवाच शूद्रोऽहं द्विजशार्दूलो मणिग्रीवाभिधानतः। स्वजनैर्जातिवर्गैश्च परित्यक्तः स्वबान्धवैः। इत्थं शूद्रवचः श्रुत्वा फलाहारमचीकरत्। उग्रदेवः प्रसन्नात्मा ततो नीरमपि पिबत्। ततो विप्रं सुखासीनं मणिग्रीवो वदद्वचः लालयंस्तत्पदाम्भोजं स्वक्रोडस्थं मुहुर्मुहुः। मणिग्रीव उवाच क्व गन्तव्यं मुनिश्रेष्ठ कुतस्त्वं चेह कानने। निर्जने निर्जले दुष्टैर्हिंसृजन्तु समाकुले। उग्रदेव उवाच ब्राह्मणोऽहं महाभाग प्रयागं गन्तुमुत्सहे। अधुना ज्ञातमार्गेण सम्प्राप्तो दारुणे वने। तत्र श्रान्तस्त्रिशाक्रान्तो मुमूर्षुरभवं क्षणात्। जीवितं मे त्वया दत्तं ब्रूहि किं ते ददाम्यहम्। अरण्यं केन दुःखेन दम्पतीभ्यां समाश्रितम्। तद्दुःखमपनेष्यामि मणिग्रीव वदस्व मे। इत्युग्रदेव वचनं ललितं निशम्य पत्न्या समक्षमनुनीय मुनीश्वरं तं। दारिद्र्यसागरतितीर्षुरसौ स्वकीयं वृत्तान्तमाह निजकर्म विपाकमुग्रम्। इति श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीपुरुषोत्तमार्पणमस्तु।